ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତ ରାଜପତ୍ର ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା नो टीटी नो प्रमोशन नो सर्विस कंटिन्यूटी जहाँ नहीं सारा भारत वर्ष रे शिक्षक मैंने आंदोलनरत एवं एपटे आसी बड़ खबर सरकार जाउछंती आमेंडमेंट करने को जहाँकि कोटि कोटि शिक्षकों मुहरे हस आनी आपण को प्रमाण सहित आम आपण सामना को नहीं आसीछु राजपत्र को किपरि आपण निजे मध्य काढ़ी पारिबे चलतु ये प्रसंग आलोचना करवा देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही एवं यह आरटी अमेंडमेंट 2026 बोली कहुपे अथॉरिटी मार्च 13 2026 रे ही आसी तो आप देखिपे ये राज्यसभा ये बिलटी इंट्रोड्यूस होगा जाइए 13 मार्च रे एवं यह खूब शीघ्र रूप नेब बिल रूप रे एवं ये बिलटी आपण देखिपारे मुझे स्पष्ट भाव देखी 131 नंबर पेज रे यह आसी बिल नंबर XXVII ऑफ 2026 राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2026 यहाँ कहुँ जोटा कि फर्दर टू अमेंड राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 को अमेंडमेंट करा जाइए बी इट एनाक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 77th 77तम रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज ए रूल टी को पढ़ा कह राइट टू चिल्ड्रेन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2026 इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस RCFC एक्ट 2026 बोली कह सेक्शन 23 जो कि टीटी कथा मेंशन होता तो आप देखिपारे चिल्ड्रेन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 रो सेक्शन 23 रे सबसेक्शन L आफ्टर the words minimum qualification the words subject to provision of subsection 4, 5 and 6 shall be inserted see section 23 subsection देखंतु A रे L यही गुड़िक इनसर्ट हेबो देखंतु फॉलोइंग सबसेक्शन सेल बी इंसर्टेड कौन कौन से इंसर्टेड है देखो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और इन एनी रूल जहाँ को बर्तमान सब बड़ कथा कहुपे नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और इन एनी रूल नोटिफिकेशन डायरेक्शन और गाइडलाइन मेड देयर अंडर No teacher who was appointed to a school prior to the commencement of this act in accordance with the recruitment rule, qualification and procedures then in force shall be required to acquire any additional qualification as notified before the commencement of this act or as may be prescribed thereafter as a condition for continuance in service, promotion, seniority or terminal benefits. तो आगर मध्य क्लीयरली कहुला कंटिन्यूअस करने आपको अपग्रेडेशन करने को पड़ो द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग एनी टेस्ट और सच अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट शैल अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली एंड ओनली टू अपॉइंटमेंट्स मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और आफ्टर सच प्रोस्पेक्टिव डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सबुठ बड़ कथा कहुई यही एक्ट पूर्वर जमी कहुला रेट्रोस्पेक्टिवली हेब यहाँ को प्रोस्पेक्टिव कहुई नो टीचर अपॉइंटेड और इन पोजिशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और डेट नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 5 above shall be subjected to compulsory retirement, termination, denial of promotion or any other adverse service consequence solely on the ground of failure to pass or non-acquisition of any test
or such other additional qualification respectively as may be prescribed under this act। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି କୌଣସି ବି ଟିଚର नो टीचर ସେମାନଙ୍କୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ଡିନାଏଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସର୍ଭିସ୍ ବେନିଫିଟ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳି କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଆଳରେ କରାଯାଇପାରିବନି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଟିଚର ଯଦି 2011 ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନା କରାଯାଇପାରିବନି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ବେନିଫିଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବନି ଏବଂ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ training and capacity building of the teachers appointed or in position prior to the commencement of this act without linking such measures to service security or promotional eligibility। ତାଙ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ସହିତ। ସେକ୍ସନ୍ 23 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely कौन कौन हो पार देखु 23A notwithstanding anything contained in this act or in any rule, notification, direction or guideline made thereunder, the service condition, promotional avenue and retirement benefit of teachers appointed or in position prior to the commencement of this act shall not be altered to their disadvantages by the introduction of any new qualification requirement। क्वालिफिकेशन न्यू क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट सहित तांकर कौनसी कथा को नियाजिब नहीं। गोटे नुआ क्वालिफिकेशन आड हैला बोली तांकर प्रमोशन एवेन्यू को क्षति पहुंचा जाई परिबो नहीं। सेही बड़ी प्रसंग एठी रहिछि। एनी क्वालिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट or after such date as may be notified by the appropriate government shall be deemed to operate prospectively। कौन से क्वालिफिकेशन जदि यही एक्ट कमेन्समेंट हेबा परे प्रेस्क्राइब करा जाउछि तेणु गवर्नमेंट द्वारा ताकू प्रोस्पेक्टिवली करा जिवो, रेट्रोस्पेक्टिवली करा जाई परिबो नाही। The provision of this section shall have overriding effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force। In section 38 Principal Act सेठी मते कुआ जायछि framing of guideline for professional upgradation, training and capacity building of teachers appointed or in position prior to the commencement of act केमिति तांकर प्रोफेशनल अपग्रेडेशन हो पारिबो, क्वालिफिकेशन अपग्रेड हो पारिबो तांको सही सेक्शन 38 रे ही कुआ जायछि। ताको आउ थरे दोहरा जायछि 39। appropriate government for the purpose of giving effect to the provision of this act issue such direction, clarification or guideline as may be necessary to protect teachers appointed or in position prior to the commencement of this act from any adverse service consequences। ये स्टेटमेंट मध्य आसी देखंतु राइट टू RT Act 2009 was enacted to give effect Article 21A आगुर मध्य कहा जायछि Constitution right of every child prescribe minimum qualification for teachers। On this basis a teacher eligibility test has been prescribed as a qualification criteria for appointment as teacher। क्वालिटी टीचर पाइबा पय टीटी को से माने गोटे क्वालिफिकेशन भाबे निया जायथिला। While the goal of enhancing teacher quality is necessary, recent judicial interpretation has resulted in the retrospective application of TT requirement to teachers who were appointed prior to the commencement of the RT Act in accordance with recruitment rules, qualification and procedures validly in force at the time of their appointment। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି
प्रसंग टीटी को जेहेतु इम्प्लीमेंटेशन कराଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି रेट्रोस्पेक्टिवली ଯେତେ लागू କରାଯାଇଛି ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସେମାନେ ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନେ ଏଠି ବଳି ପଡ଼ିଥିଲେ द इश्यू हैज assumed urgency following Supreme Court judgment 1/25 रो जो जजमेंट आसीथिला by interpreting section 23 of RT Act apex court held that TT constitute a mandatory minimum qualification not only fresh recruitment but also for teachers recruited prior to act. Supreme Court directed the in-service teachers having more than 5 years जो मैंने आपण जानी सारी सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देते जार 5 वर्ष अधिक थी से रे टीटी देवे एवं जो मानकर 5 वर्ष कम थी से एग्जामेशन देते जदि 2 वर्ष मध्य से टीटी कर न पारे से प्रमोशन दिज्व ना एवं 5 वर्ष कम थे से रही पारे चाकरी किंतु टीटी बिना प्रमोशन दिज्व ना एमती गोटे जजमेंट आसाला सच रेट्रोस्पेक्टिव एप्लिकेशन हैज जनरेटेड वाइड स्प्रेड्स कंसर्न एमंग द टीचर्स एज मेनी ऑफ द टीचर्स have rendered decade of dedicated service and have substantially contributed to the expansion and consolidation of the elementary education, particularly in rural, remote and social disadvantaged areas. They from the backbone of elementary education and any disadvantages them for want of TT qualification would not only undermine legitimate service expectation and principle of natural justice but also risk establishing the continuity. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ कष्टकर थिला से माने बहुत समय धरी चाकरी करथिले चाकरी थ्रेटनिंग आसिथिला कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइजेस दैट लेजिस्लेटिव पॉलिसी मस्ट ऑपरेट विथ द फेयरनेस रीजनेबल्स एंड प्रोपोर्शनलिटी द डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल अगेंस्ट आर्बिट्ररी रेट्रोस्पेक्टिव पेनल कॉन्सिक्वेंसेस एंड द नीड टू बैलेंस इक्वालिटी रिफॉर्म विथ इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी रिक्वायर ए calibrated and prospective approach in the implementation of qualification norm. तेणु जेहेतु एते संख्यार शिक्षक माने एते समय धरी चाकरी करिसेंती सर्विस देइसेंती सेति ये बिल टी आसीछि. The proposed bill seeks to clarify that the requirement of passing the TT or such other additional qualification criteria under RT Act shall operate prospectively and shall apply only to appointment made after the commencement of the act or after such notified date as may be prescribed. The amendment further seeks to provide statutory protection to teachers appointed prior to the commencement of the act by safeguarding their continuance in service, promotional avenues, retirement benefits, while simultaneously enabling structured professional upgradation and training without linking such measures to punitive consequences. जॉन ब्रिटास तरफ ये रही सब बड़ कथा रही 11/2/11 पूर्वर जो मैंने नियुक्ति पाई से प्रोटेक्शन दिज्व से लाइन प्रमोशन पाइबे टीटी से आवश्यकता ना क्लीयरेंस कर तो सब बड़ खबर रही गुड न्यूज रही आप देखा परवर्ती अपडेट.